पन्ना लाल 302 केस बलात्कार 2-3 साल बच्ची का। मैं शव के नशे में था। बलात्कार किया और गला दबा दिया। कोई रोए का आवाज़ आ जाए, कोई आज पकड़ ले तो जो है आवाज़ न बोलेगी तो गला दबा दिया। A lot of rapists who, for example, rape small children believe that the girl enjoyed it. In fact, many of them also substitute or project a grown-up adult woman on a young child or on a family relative. I remember one person who was an uncle who raped his niece. चाचा, हाँ चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तुझे नहलाऊंगा। नहाएगी? She was only 13 at that point of time. He was telling me that when he raped her, he put his hand on her eyes. So I said, why did you do that? He said, I did it because her eyes were reminding me of the relationship that I had with her. I had to block that out completely so that I could imagine that I am raping a grown-up adult woman. एक केस तो ऐसा है कि रोंगटे खड़े कर देगा तुम्हारे। मुंबई का केस था, झोपड़पट्टी का। बाप ने लड़की का रेप किया, बेटी का रेप किया। महिला आयोग व्यक्ति से बात करने के लिए गई। वो ये कहती है कि वो हेकड़ी के तौर पे बैठा, आगे ही साड़ियाँ फरकातियाँ, क्या करने आई हो? तो उन्होंने कहा कि इस तरह से शिकायत आई है आपने की। हाँ तो किया है, मेरे झाड़ का फल मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा? कहते दूर दूर तक उस व्यक्ति के मन में कहीं पछतावे का भाव नहीं था। It can be a person sitting right next to you in the bus, a person you work with, it can even be your boss. For all you know, it can be your husband. तुम्हारे शरीर पर मेरा पूरा अधिकार है। I do not approve of rape in marriage or any kind of violence, physical or mental, against women. I simply detest that. I've always wondered, like, why didn't I say something to my parents? The main reason was because of my sisters. I didn't want anything to happen to them. That's why it happened, like, why I let it happen to me. He did sort of threaten that, if you say something, like, something will happen. Whether it was conscious, whether it was unconscious, I honestly thought, like, oh my God, if I say something about this, he is going to do something terrible to my family. So I could never bring that upon them. चुप कर, बस बैठी, जो हो गया, छिपा ले बेटा, मरना हो जाएगा, तेरी छोटी बहनों की भी शादी नहीं होगी, रहने दे बच्चे, ये करते थे। Terrifying perceptions that we have of what rape is, and the others who say, अच्छा ठीक है, rape ही तो था, it's only that, it's only rape, so what's the big fuss? Anyway, she's all right, अब तो हो गया, अब इसको बचा दो, इसको forgive him. उसमें उन लड़की ने मना किया। हम लोग भी इसी बात को मानते हैं। जिस दौर से गुजरा, आप केवल सजा को हटाने के लिए उससे शादी करना चाहते हैं, पर वो जो पति उसके सामने रहेगा एक दरिंदा के रूप में, क्या वो सुखी रह पाएगी? मेंटल रिटार्डेड बच्ची, मैं केवल वो उदाहरण आपको दे रही हूँ जो अंदर तक हिला दें अपने को। खून से लथपथ, अभी सूख गया था सारा ब्लड उसके सलवार और उस पर। माँ कहती कि रात भर मुझे बहुत थानों में इधर से उधर भटकाया, मैं क्या बोलती उसको, क्या जवाब दूँ? मेंटली बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं। एक दिन पहले 5-6 बजे यहीं पर दिल्ली में हुआ, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, केस बना। अब ऐसों का क्या जवाब, क्या इन लोगों ने क्या पाप किया? 3 महीने के बच्चे के साथ रेप होता है या 70 साल की औरत के साथ रेप होता है। आज एक केस डील करके आई हूँ जिसमें खुद के पोते ने 72 साल की अपनी दादी के साथ रेप किया। मतलब विकृति की सीमा है। It doesn't speak much for a society, a civilization which claims 7,000 years of recorded history and so on. One thing that we have found is that the biggest thing that probably leads to rape and increase of rape is the silence and the rapist's belief that the woman would remain silent about it and not speak about it.
hundreds of rapists that we have spoken to, they always say they target the person who is shy, who's quiet, who's docile, who will not speak up about it. A variety of factors, socio-economic, possibly emotional factors due to stress at home, and that combined with intoxication leads to, strange acts which they regret later. एक प्रकार की संस्कारहीनता है जो बाल्यकाल से बच्चों में उत्पन्न होती है, प्रोत्साहित की जाती है और बाद में वे बेलगाम अपनी कुंठाओं और वासनाओं को बलात्कार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं. I agree that if they see depravity of women, women being maltreated in the homes, children are bound to be influenced. Children are bound to carry these forward because that's what the research is also indicating. कोई मतलब माँ के पेट से कोई ये अपराध सोच के नहीं आता, जो भी होता है यही होता है. Boys are not born learning to have teased, learning to have committed these crimes. Somewhere down the line, the boys have lost their way. Boys were subject to sexual abuse when they were growing up. Boys whose fathers are violent, or boys who get bullied in school, criminally assaulted in hostels and so on, they grow up with a certain kind of trauma and they want to avenge the humiliation they suffered by subjecting a woman who is weaker, in physical terms. So by violating a woman, they think it's manliness, but it's not. It's something is seriously wrong with men or any man who thinks that he can bully a woman into submission. ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि जैसे औरत को किसी भी तरह से उसको दबाए, और तो मैं इससे सबसे पहले तो इसको मानसिक रोग